Hello everyone, you are most welcome in this brand new episode of painting. In this video, I'm going to make canvas using this Fevicryl Canvas Painting Kit जो recently Fevicryl Hobby Ideas ने release करी है, and I just got my hands on these and I'm going to tell you कि इस kit में क्या क्या वो लोग available कर रहे हैं और प्लस कौन कौन से डिज़ाइंस हम इससे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट गो एंड वॉच की पूरी प्रोसेस क्या है. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल टूर कि कैसे ये पूरी किट में क्या क्या है. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किट मुझे 199 रुपीज़ की पड़ी है. आप इसे ऑफलाइन किसी भी नॉर्मल स्टेशनरी स्टोर से जाके ले सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं. सो मे बी यूल गेट 10 or 20 रुपीज़ डिस्काउंट फ्रॉम ऑफलाइन और ऑनलाइन एज वेल. ठीक है. इसमें लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स 3 स्टेंसिल इनसाइड एंड क्या क्या है इसमें. इंक्लूड्स कैनवस बोर्ड, 6 एक्रेलिक कलर्स, फाइन आर्ट ब्रश एंड स्टेंसिल डिज़ाइन. सो दिस इज़ द किट एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलर बॉक्स से. दिस इज़ फेविक्रिल एक्रेलिक कलर बॉक्स. ये यूजुअली हमें सेपरेट भी मिल सकता है. इसमें 6 शेड्स हैं. येलो, ब्लैक, रेड, green, white and blue. This is a brush. This is I think 0 number का brush है. And this is a fine art canvas. Size is 8x10. This is a 8x10 size canvas. And these are the stencils. They have dropped these 3 stencils. This one. Oh wow, this is very pretty. And this one. So today I'm going to make these 2. एक स्टेंसिल के लिए मैं जो प्रोवाइड किया है किट में उन्होंने वो कैनवस यूज़ करूँगी. दूसरे पेंटिंग के लिए मैं एक अलग से सेपरेट कैनवस यूज़ करूँगी. सो पहले हम पहली पेंटिंग बनाएंगे और बाद में विल मूव टू अनदर वन.
So time to review this kit. As you can see, this is one of the painting I made while using this kit. So if we talk about मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बोर्ड का साइज एकदम परफेक्ट है, जो स्टेंसिल्स हमने वेरिएशंस हैं एंड 6 कलर्स हैं एंड बट साइज ऑफ ब्रश, मुझे लगता है कि ब्रश का साइज जो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए था, बिकॉज इतने पतले ब्रश से पूरे कैनवास पे पेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। प्लस उन्होंने स्प्रेड करने के लिए स्पॉन्ज जैसा कुछ देना चाहिए था, सो दैट मुझे थोड़ा इजी होता इसको स्पंज करने के लिए। जैसे कि आपने देखा, मैंने टिश्यू यूज़ करके, हार्ड वूवन नॉन वूवन टिश्यू यूज़ करके मैंने स्प्रेड किया है। इसके छोटा सा पीस होता स्पॉन्ज का तो बहुत इजी होता इन्हें मिक्स करना। प्लस ब्रश अगर फ्लैट देंगे ये राउंड की जगह और थोड़ा बड़ा साइज में देंगे तो बेटर होगा यूज़ करने वालों के लिए, बिकॉज दिस ब्रश इज़ ऑनेस्टली ऑफ नो यूज़। And apart from that, overall I like this kit, and these are the only things I think they need to improve in their kit. Otherwise, if you're a beginner, so this is the perfect kit you can use to make your favorite artwork. Pas de soleil, pas de soleil.